Hello all, I welcome my dear students and viewers to my YouTube channel ePolitical Science, and today I will be completing the second part of discourse analysis as I had earlier promised. I hope you are preparing well for your exams. All the best for all of your papers. And so let us start with the discussion on discourse analysis part 2, research methods in politics. So previously we had covered the definition of discourse analysis, then the main uh, areas where research discourse analysis is focusing on, and then how you carry on the discourse analysis part, the methodology I had discussed, and then I had told that I will discuss the types and the advantages, disadvantages, and also the relevance. Now, as far as discourse analysis is concerned, I had also told you that this is part of the qualitative analysis, or you can say the qualitative methodology. So, when we are talking about the discourse analysis, there are certain types of discourse analysis. Now, what are those types? First type is critical discourse analysis. As I keep on discussing in the class also, that critical part in any understanding is very important. Now, when we are trying to understand the critical part in this methodology, we need to focus on power, ideology, social inequality in language use. Often it examines political speeches, media, and institutional language. Then you can talk about key theorists as Norman Fairlaw, Teen Van Dis, Ruth Woodcock. Then conversation analysis. Now, how when you are talking about any discourse analysis, as I had discussed earlier also, conversation part is very important. So it studies verbal interactions, turn taking, and conversational structures. Then we come to the narrative analysis. Now, narratives, how you build narratives, how you try to make others understand any narrative. It is very important that you need to examine how stories, they shape perceptions, they change the viewpoints of people, how they shape identities. And then the semiotic analysis that investigates symbols, signs, and visual elements in communication. Then what are the advantages part? Why discourse analysis is important in research field? Now it helps to, it unfolds, it reveals the hidden power structures. Now the different power structures which operates in the society, many times we are hardly aware of these structures, and when we come to the reality we are more able to connect with the grassroots thing. So it is very important. And then the second important advantage is it is flexible across disciplines. Now in this discourse analysis we have various discourse studies. Now since each discourse they have their own viewpoints, own power structures, own realities, sometimes own ideologies also, so they have their own flexibility involved within that. Then they are deeply embedded. Now contextual, they have the rich insights, they can give you more inputs about the different realities, different pictures, different narratives. So they carry more advantages within this domain. So when you are discussing students about the advantages, please do not just leave with the pointers, you keep explaining it. That means you have to expand the points within your own words, and you can put examples also to substantiate your points. What happens that in exams, in tests, in assignments, we just write the points and leave it, and the points are hardly sufficient to explain what you want to say. Okay, and sometimes it is incomplete also. So please make it a habit whether you are writing any point, any advantages, disadvantages, please explain your points. And if you feel that you do not have sufficient
content to write it, try to write in your own words, making it more understandable. And today I also wanted to tell you one more thing, that since I could not connect with you past days, I was keeping very busy. So you have in this paper 3 units. Please focus on all the 3 units properly. I've already told you that the first unit is theoretical unit, so it has its own importance, and the last unit is very important because it carries the methodology. So if you think that out of 10 questions you have to do 5 questions, so each units they will be having 3 questions each. So you have 9 questions, and then one question that could be of short notes, it can have from any unit. So I would suggest you that if you want a safer side, so you can leave one unit, okay, one full unit you can leave, but then you have to prepare both the first and the third unit very properly. So if you want to be more on the safer side, then you can do that. You can cover first and third unit very extensively, and the second unit slighter part which you think is more important, or vice versa, you can do for second and third and then the first one. Okay, so if I get time, I'll come up with your analysis of the questions. The nature of the questions are already discussed, because the paper research methods in politics, which you are having currently. Earlier we had a paper called public opinion and survey research. So you can go within that playlist, and there are many important questions also there, which they are very common for this paper as well. So you can go and connect it. Okay, and if I get time, then I'll come up with more analysis. Then what are the disadvantages? It has a subjective interpretation risks, because the thing is, when you are talking about any analysis, any understanding, viewpoint, it can be subjective. So when it is subjective, it is bound to create your own biases, your own prejudices, your own side, which has a difference from what others feel about it. Then time consuming data analysis, has time consuming methodology. It requires strong theoretical grounding. Obviously discourse analysis is something which has a theoretical binding, theoretical understandings, theories needs to be very strong. So if any scholar, research scholar or researcher lacks understanding within the theoretical bracket, so he or she cannot use this methodology properly. Then discourse analysis के क्या प्रकार हैं? अब जैसा हिंदी में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो भाषाई विवेचना, भाषाई विवेचना में क्या हम कह सकते हैं? वाक्य संरचना, शब्दों का चयन, भाषा के व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर सामाजिक सांस्कृतिक विवेचना करता है, भाषा का उपयोग कैसे सामाजिक मानदंडों, शक्ति संरचनाओं और सांस्कृतिक विचारधाराओं को दर्शाता है। अगर हम आलोचनात्मक विवेचना का संदर्भ देखें, तो भाषा के माध्यम से सामाजिक असमानता, राजनीतिक प्रचार प्रसार और वर्चस्व को उजागर करना, जैसे मीडिया और राजनीतिक भाषणों का विश्लेषण होता है। एक और बहुत अच्छा जो इसका टाइप है वो है फुकोडियन एनालिसिस। फूको एक बहुत बड़े स्कॉलर रहे, तो मिशेल फूको के सिद्धांत पर आधारित है, जो ज्ञान और शक्ति के बीच दोनों के जो संबंध है उसको समझने पर केंद्रित है। तो डिस्कोर्स एनालिसिस के एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है, मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन आ रहा है, तो जो भी पार्ट 1 में मैंने बताया है सारा, जो आपके कैसे टाइप्स है, क्या है, कैसे आया डिस्कोर्स एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, प्लस जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रेलेवेंस, किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, अब इसके फ़ायदे जैसे मैंने हिंदी इंग्लिश में बताया कि गहरी समझ, भाषा के माध्यम से सामाजिक वास्तविकता को समझने में मदद करता है, क्योंकि भाषा का प्रयोग है इसमें। अब ये जो भी समाज में
बहुत असमानताएं हैं, संरचनाएं हैं जिनको हम नहीं समझ पाए अब तक, या जिनकी वजह से जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होके अगर आ रहा है तो उसको हम कहीं विज़ावी समझने की कोशिश करते हैं। अब शक्ति संबंधों को उजागर करना, सीडीए मतलब यहाँ पे जो हम कहते हैं क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, जो हमारा इस डिस्कोर्स एनालिसिस का एक बहुत बड़ा आधार है, उसके माध्यम से छुपे हुए पूर्वाग्रहों और वर्चस्व को पकड़ता है कि किसकी ज़्यादा पकड़ है समाज के अंदर, क्या रियलिटी है। तो इस रियलिटी को जब हम समझते हैं तो क्या हम ज़्यादा वास्तविकता के करीब होते हैं, या हम वास्तविकता को कुछ और मापदंडों से समझने की कोशिश करते हैं। लचीलापन मतलब बहुत सारे तरह के डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, टेक्स्ट ऑडियो विजुअल का विश्लेषण कर सकता है। अब सीमाएं क्या हैं समस्याओं में, मैंने पहले बताया, क्योंकि व्याख्या में व्यक्ति परकता। अब क्योंकि सब्जेक्टिविटी है तो पूर्वाग्रह होना निश्चित है, तो शोधकर्ता के नज़रिए से पूर्वाग्रह आ सकता है। समय लेने वाले बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सैद्धांतिक जटिलता, क्योंकि जब फूको को हम स्टडी कर रहे हैं या किसी और सिद्धांत कारों को स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कई बार कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है, क्योंकि जिनके सिद्धांतों को जो नहीं समझ पाते हैं या सिद्धांतों में कहीं वो वीक हैं, तो बहुत हद तक ये मेथडोलॉजी को वो यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए सिद्धांतों को इसके बेसिक को समझना इसमें बहुत ज़रूरी है इस मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए। अब हम देखते हैं कि सिर्फ हम जानते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस ऐसे हो रहा है, ऐसे हम कर रहे हैं, इसके ये सारे फ़ायदे हैं, इसके ये टाइप्स हैं, पर अगर डिस्कोर्स एनालिसिस का कोई फ्यूचर ही नहीं है तो फिर हम कैसे इसका रेलेवेंस, या हम क्यों मानेंगे कि उपयोगी है, महत्व इसका है। तो why it is important. So it helps in media studies, now how news framing influences public opinion, political science analyzing political rhetoric and propaganda. Then you have sociology examining gender, race, caste, class, language, education studying classroom interactions and institutional policies. Now when you look at healthcare analyzing डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन, अभी हिंदी में इसके उदाहरण अगर हम देखें तो मीडिया विश्लेषण, अखबारों में जैसे किसान आंदोलन है उसको कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, तो या फिर किसी भी चीज़ को, कोई भी हैपनिंग को, भारत अमेरिका के संबंध को कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, तो जो भी मीडिया विश्लेषण है वो कहीं ना कहीं इसको हेल्प करता है इसके एप्लीकेशन को समझने में। राजनीतिक भाषण में भी हम डिस्कोर्स एनालिसिस के एप्लीकेशन को देख सकते हैं। सोशल मीडिया के अध्ययन में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से किस डिस्कोर्स के संदर्भों को लिया गया है और अप्लाई किया गया है। तो इसके गहरे अध्ययन से ही हम इस मेथडोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेथडोलॉजी बेसिकली थियोरेटिकल डिस्कोर्स है, इसीलिए और साथ के साथ संरचनाओं की बात करता है और हमें हेल्प करता है अपने अध्ययन को, अपने शोध को इन जो हम कह सकते हैं वेरिएबल्स को, फैक्टर्स को शामिल करने में और एक बेहतर शोध करने में। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू do well in your paper. Now as far as the archival research part is also concerned, I'll come up with the second part as soon as possible, as I had promised for the archival research also. And mostly I have tried to cover all the important things. Still, if you feel anything is missing, you can put your views in the comment, and maybe I'll come back to you, and then we will discuss again. Thank you. All the best. God bless you.